एवरीवन, देखो हम आलू की सब्जी बना रहे हैं, स्वादिष्ट यम्मी। आलूओं को साफ कर लिए हैं। इसके बाद पैराई में तेल डाल के उसको गरम करेंगे। फिर उसमें हम अपने आलू को डालेंगे। छिले हुए आलू को, साफ किए हुए आलू को थोड़े फ्राई करने के लिए उसमें हम डालेंगे। सभी सारे टुकड़ों के आलू को हम काट के डाल देंगे फ्राई होने तक, उसको रेड होने तक के लिए। फिर हम उसको ढक के फ्राई करेंगे और अच्छे से हम उसको पकाएंगे। सुनहरा होने तक, देखो सुनहरे कलर में दिख रहा है हल्के। फिर इसको हम निकाल लेंगे अलग से। फिर उसमें हम पचफोड़न डालेंगे तड़का के लिए। कटे प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसको थोड़ा देर हम भूनेंगे, पकाएंगे। चलाते रहना, पकाते रहना। फिर उसको थोड़ा ढक के पका देंगे। फिर उसको चलाएंगे, थोड़ा सा नीचे पकड़ेगा। इसमें हम कटे हुए टमाटर को डाल देंगे, पेस्ट बनाया हुआ। फिर उसको अच्छे से मिला के पकाएंगे। थोड़ी देर तक हम अच्छे से मिला के फिर उसको ढक के थोड़ा सा पकाएंगे हम, ताकि वो अच्छे से पक जाए। नमक डालेंगे स्वादानुसार। फिर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मसाला गरम, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच फिर धनिया पाउडर डालेंगे। फिर उसको हम अच्छे से मिला के हम पकाएंगे। पेस्ट तैयार होने के बाद उसमें फ्राई किया हुआ आलू मिला देंगे। फिर इसको अच्छे से मिला देंगे। ग्रेवी अच्छे से मिल गया। थोड़ा सा अच्छे से मिलाने के बाद स्वादिष्ट है। फिर उसको हम थोड़ा देर पकाएंगे।